चाहे यूनियन गवर्नमेंट पे यहाँ पे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, हम ये डिमांड को रखते जाएंगे जब तक लद्दाख सेफ नहीं होगा, जब तक हमारा लैंड सेफ नहीं होगा। I feel that climate change and these issues has never been a political issues. If you look at even in Ladakh, in the last election, no issues was found on the basis of the climate or ecological issues. लद्दाख को भी फिर मणिपुर की तरह लद्दाख को भी नहीं बनाया जाए। आपको डर लगता है? डर लगता है सर हमें। Just reached the spot where the protest had been on for the past 16 days. Sonam Wangchuk, the educational reformist and a climate activist, who is on a 21-day fast. But the day when I'm filing this story, it is the 16th day of his fast. For the past 16 days, he had been here out in the open, इस खुले आसमान के नीचे. Sonam Wangchuk अपने अनशन पे है, बिना खाए, बिना बाहर गए, बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और इस ठंड के मौसम में बाहर में पूरा दिन रहना आसान नहीं है। उनके साथ इतने सारे लोग भी हैं और ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। जब मैं इस कंपाउंड में प्रवेश कर रहा था तो लोगों ने कहा कि आज आपको अगर ये नंबर दिख रहा है करीबन 150, 200, 250, कभी कभार ये 300 भी हो जाते हैं इस ठंड के मौसम में, जहाँ टेम्परेचर -10 तक या -12 तक चली जाती है। वो लोग इधर पे बैठे रहते हैं ताकि उनका जो डिमांड है, डिमांड की शोर, डिमांड की आवाज़ लद्दाख से बाहर न्यू दिल्ली तक पहुँचे। 6 शेड्यूल की मांग है, लद्दाख को बचाने की मांग है। They just want to save this land. They want to save the indigenous cultural identity of this place. They want to save the rich heritage of this land, and that's the reason they have taken on this Gandhian path of protest. You suffer yourself to let the world know what it means like suffering, what it means to suffer, and to convince the people in the outside world that this suffering is for a real cause and that cannot be shrugged off, shunted, ignored, and neglected. सर, आप लोग रोज़ इधर पे प्रोटेस्ट में आ रहे हैं जी। आगे का रास्ता क्या है? अभी हम आगे की रास्ता यही हम उम्मीद लेकर के पूरे लद्दाख की हर एक गांव से लोग यहाँ आकर के आज 16वें दिन चला हुआ है, जिसके अंदर हमारा नंबर 1 पर रोलेक्स अवार्ड सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं उनकी साथ देने के लिए। बाकी सारे भी कोई 9 दिन, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन अनशन पे बैठ करके, भूख हड़ताल पे बैठ करके, इतना जो आज 22 थोड़ा सा मौसम ठंडा मतलब ठीक है। इससे पहले बहुत मेहनत में थे, काफ़ी मेहनत में, उसमें भी सारे ने अपने मुसीबतें जलते हुए उम्मीद रख करके। और मैं खुद अगर अभी का हूँ तो मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। आज हमारा एक संगठन आया था यहाँ पर उनके पक्ष में बातें करने के लिए, उनके पक्ष में हूँ बोलने के लिए। आज हमारे ये लद्दाख की स्थिति देख करके हम बहुत अफसोस होता है। मैं अपने यहाँ के कोर कमांडर जी से और वहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से और डिफेंस मिनिस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, कि हमारे इस मांग को हम एक भूतपूर्व सैनिकों की ओर से रिक्वेस्ट को आगे पहुँचाए, जिससे पूरा आगे की जो मिनिस्टर लोग समझे, लद्दाख को अच्छी तरह समझे और हमारे इस मांग को पूरा करने में पूरे सहयोग दें। आप
रो क्यों रहे हैं? रोने अफसोस हो जाते हैं क्योंकि लोग अभी भरोसा नहीं है कब किसको क्या होगा। कोई 15 दिन, कोई 16 दिन इतने इतने बैठ करके भूख हड़ताल पे बैठे हुए, सिर्फ पानी पी रहा है, सिर्फ पानी पी करके इस तरह के बैठे हुए हैं। खुशियों से अच्छा लगा, मतलब ऐसे खुशी में बैठे हुए नहीं है। लोगों को ये जिसको चिंता है वही बैठे हुए हैं। लद्दाख की फ्यूचर को देख करके, लद्दाख की भविष्य को देख करके लोग बैठे हैं। तो वो बैठने वाले वही लोग हैं जिनको हमने कभी वोट ही नहीं दिया, जिनको हमने समझे ही नहीं। उन्होंने हमको समझा है, पूरे लद्दाख को समझा है। जबकि लोग अच्छे को ढूंढते हैं, ये बुरे को ढूंढ के कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को, ये सोनम वांगचुक वगैरह इन्होंने जो है ना इतना शिक्षा दिया है, ये सारे भूल नहीं सकता सर। इतना अफसोस होता है, रोना तो पड़ेगा। शेड्यूल के 6 शेड्यूल अगर मांग रहा है तो किसी हक में कहीं लिखे हुए है, कभी संविधान में है, उस चीज़ को मांग रहा है तो उसको मानना चाहिए। Sixth schedule is there applicable in 4 northeastern states: Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. Now, the whole idea of sixth schedule had been that the rights of the tribal people, the indigenous culture of the tribal people, the heritage of the tribal people, the land of the tribal people, they can be safeguarded and protected. Now, as per the constitution, Indian constitution, 6th schedule is there for the 4 northeastern states. And essentially, even after making the promise, वो वादा करने के बावजूद जब इसको लागू नहीं किया गया, तब बीजेपी की तरफ से बहुतों ने कहा कि 6th शेड्यूल तो नॉर्थ ईस्ट के लिए है। लेकिन फिर भी यही बीजेपी 2019 में अपने ही मैनिफेस्टो में 6th शेड्यूल की वादा किया था। वो वादा पूरा नहीं हुआ। और ताज्जुब की बात है, लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन में से 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। और आज के तारीख में ये लोगों का कहना है कि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन इस जगह की मेजॉरिटी है तो उनको अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशन, अपनी हेरिटेज को बचा के रखने का अधिकार उनको देना चाहिए। और सवाल लाजमी है, प्रॉमिस आपने किया था और हर बार कोई प्रॉमिस करे 15 लाख का, कोई प्रॉमिस करे 2 करोड़ नौकरियों का, कोई प्रॉमिस करे 6 शेड्यूल का। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर बार कोई प्रॉमिस करे और हर बार लोग उस प्रॉमिस को एक टाइम के बाद भूलने में मजबूर हो जाए। If I can just go that side to give you a brief history of this place and the reason why this place has been selected, so that symbolically the message of fight is being given out loud and clear. This stupa is dedicated to the loving memory of late Lobsang Sondus Lekir and Tashi Angchuk Saspol. I sincerely apologize if I have pronounced the names incorrectly, who laid down their lives on January 24, 1981 during the agitation for scheduled tribe status for Ladakh. Then there were others who had made a sacrifice, the supreme sacrifice, on August 27, 1989 for the cause of Ladakh Autonomous Hill Development Council. And this stupa is in the memory of all those fallen, all those who have fought with their lives with the demand like Autonomous Hill Development Council, like Scheduled Tribe status for Ladakh, and all keeping in mind the interest of the people, the interest of the land. One day of fast could be little overwhelming for you all, but Sonam Wangchuk had been on fast for the past 16 days. He's barely in a condition to speak, and I feel bad sitting next to him doing this interview because I know the kind of exertion he has to go through, both emotional and physical, in order to speak to me, even if a couple of lines. Just a short while back, his nose was bleeding, and I saw people immediately opening this
umbrella to give him some shade. I don't know if I can ask you how are you, because we all know it is not easy to be on a fast for 16 days. Still, I just saw a couple of minutes back your nose was bleeding. Has the bleeding stopped? Yes. Yes, I'm okay. Sir, 16 days of fast. Your health has become fragile. Anyone can make out the physical changes that have happened. You are still determined to continue with this? Thank you. Yes, of course, we are determined for much longer than 16 days. Why we are on this fast has a serious reason for Ladakh and for the nation. For Ladakh, it is to safeguard the fragile ecology of this very sensitive ecosystem and the unique indigenous tribal cultures that thrive here under the 6th schedule of the Indian Constitution as expected by the people and promised by the ruling party and the government. So without that, this sensitive region, both ecologically sensitive and strategically, defense-wise very sensitive region, will have unrest because nothing is secure here. We have industrial lobbies and mining companies pushing from the south, capturing huge pasture lands, and we have the Chinese encroachment that's taking thousands of square kilometers of nomadic shepherds' lands. So this kind of region deserves the provision that Indian Constitution kept our forefathers back then exactly for these situations. So that's all we are hoping, that the government will keep the promises that they made to Ladakh in 2 different elections, which they won with heavy majority only because they made these promises. But later they backtracked, dilly-dallied for 4 years and then finally clearly declined. But we still have hope that good sense and, conscience will awaken in them and they'll finally keep their promises. Thank you very much. Thank you. So I am at the moment involved in this movement to support this movement, to strengthen it. So I basically came all the way from the far-flung area, from the LOC to support this cause, because it's very evident now that post-abrogation of Article 370, the safety, security and the protection that used to be there in the Article 370, like the provision of 35A, that has not been now as of now. So Ladakh is now completely unprotected in terms of any constitutional, if we say, protection. If it allows for mining, if it allows for the outside corporates to come and exploit the nature, then there will be a mass disaster in Ladakh as well. The local ecology, as well as it will have an impact on overall the climate change. I feel that climate change and these issues has never been a political issues. If you look at even in Ladakh, in the last election, no issues was found on the basis of the climate or ecological issues. More of the issues were the local, or more of them were some social issues, or the issues which were not so relevant to the ecology. They've already kept this in their manifesto, but again they declined it, which means the government do politics on certain issues which things are important to the public, but when it comes to the actual things, when they come to the power and granting such working on such issues, then they decline. That is evident from this moment. Why is climate change not a political issue? We are knocking elections 2024, and look at those TVs,
look at those channels. While they call it Battle of 2024, Clash of Titans, Mega War, and what not. And then here our leaders talk. Tu मैं, personal jibe, religion, this, that. Nobody talks about climate. And climate change affects one and all. Climate change affects people cutting across every religion, race, caste, creed. It doesn't affect people of Ladakh alone. Yet, very seldom you would come across leaders make climate and climate change a political issue on which they seek votes. लद्दाख जो है एक ग्लेशियर से रिलेटेड एक जगह है. अगर लद्दाख ख़त्म हो जाएगा कि ये लद्दाख की बात नहीं है. अगर आप एक कंट्री का आप ताज को ख़त्म करोगे तो पूरा कंट्री ख़त्म होने की कगार पे भी आ सकते हैं. तो एक यूथ होने के नाते मैं ये मैसेज सारे इंडियंस को देना चाहूँगा कि आज लद्दाख खतरे में नहीं है, आज पूरा इंडिया खतरे में. जब हम लद्दाख आज एक राइट, हम डिमांड नहीं बोल सकते हैं इसको, हमारा राइट जब आप लोग हम मांग रहे हैं तो आप उस राइट को पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? आपको लगता है धोखा हुआ? या ओबियसली लद्दाख के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि मैं एक यूथ हूँ और मैं 2019 से ये स्टूडेंट एसोसिएशन बोल लो या यूथ एसोसिएशन में जुड़ा हूँ. तब से मुझे कहीं ऐसे आश्वासन जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला. आज आप खुद आप देख सकते हो हमारे मैनिफेस्टो में कितना पॉइंट्स रखा था. अगर देखा जाएगा तो 2 पॉइंट्स भी उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया. चाहे यूनियन गवर्नमेंट पे यहाँ पे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, हम ये डिमांड को रखते जाएंगे जब तक लद्दाख सेफ नहीं होगा, जब तक हमारा लैंड सेफ नहीं होगा, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाला. मैं यही संदेश देना. आप लोग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया कभी इधर ये प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद? यही सबसे एक बहुत बड़ा दुख समझो या हमारी ही बदकिस्मती समझो, हमारा ही लीडर आज यहाँ पे मौजूद नहीं है. क्या नाम है उनका बताइए, सबको जानना चाहिए. ऑब्वियसली लोग तो जानते ही होंगे. उनका एक पार्लियामेंट में स्पीच भी बहुत एक वायरल हुआ था, जमयांग सिंह नामगेला. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला था कि ये जेटीएन कौन है. मैंने भी उस टाइम प्राउडली कहा था एक हमारा यूथ लीडर है जो यूथ के बारे में अभी काम कर रहे हैं. लेकिन देख के ये मतलब अफसोस हो रहा है कि आज ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. प्रेजेंट का तो बात छोड़ो, उन लोगों ने सोशल मीडिया की थ्रू एक भी मैसेज हमारे लोगों को नहीं दिया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. अगर वो लोग एक बात कर रहे हो तो सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं. मैं ये भी क्लियरली आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट से कि आप सेफ गार्ड दे जो किस फॉर्म में दे रहे हो, किस आर्टिकल के थ्रू आप लोग देना चाहते हो? क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा साजिश दिख रहा है, इलेक्शन आने तक आप एक सेफ गार्ड दे दोगे हमें, इलेक्शन के बाद उसको हटाया जाएगा. हमें क्या भरोसा उस पर? क्योंकि अभी लद्दाख का भरोसा अभी टूटने वाला है. लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट अ legislation, and that is the reason they don't have an assembly. So now at the moment Jammu Kashmir, even though they are an UT, but they have a legislature, and there in that legislature Ladakh no longer has any representation. In Parliament, in Lok Sabha, Ladakh has only one member of Parliament. In Rajya Sabha, 0 representation. And they are saying that if public representatives are meant to represent the people and their issues on the floor of the Parliament, known to be the temple of democracy, then why shouldn't India think that Ladakh is a victim of inadequate representation? बुजुर्ग इंसान है. माँ आपका उम्र बहुत है, आप फिर भी इधर पे है प्रोटेस्ट में, तकलीफ नहीं हो रहा है? Bile khoite u mola ragale izam gunglos kyote ka kyote du pachi ves kyote in mola Ladakh se nazan arista. Mana no khatak tak ta nang musik yon esperazer ba mayan. Ating mo ang nain le. Ni ka jak ma sum ji mene yong ba mayan. Dak sangit san po se go hom so se dak dar ka man chong ba song mende. Lo chams kyochen kunglo. Lor dun ju ton ha mene men da pi choni ki betas ket pa khong se met pi. Bia juju. Ni chu sa chang ma thapa. Du bin nga cha sikani nokpa. Bin yos bin no lo cham so se gana en molena. Sperazer ba mayan bugak se kyon no pas. Ni zug molena la ngoi din adik se nokpa. Chang mos kanji yong ba min du.
यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। अभी दादी जी का उम्र हो रहा है 75 ईयर्स। हाँ। तो ये अभी जो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी है, उनके सपोर्ट में इन्होंने 3 दिन यहाँ पे आए। हाँ। लेकिन इतना उम्र होने की वजह से इनको अभी आने वाले जनरेशन के बारे में इनको चिंता है, लद्दाख के बारे में चिंता है, यही बोल रहे हैं। जो देश के लोग अभी तक इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, बहुत सारे मीडिया ने दिखाया नहीं ये मुद्दा को, क्या कहेंगे देश के लोगों को? सर इसमें भी मुझे कुछ पॉलिटिक्स ही लगता है कि दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल रियल है ना सर। इसमें तो क्या बोलूँ सर, अब मैं क्यों नहीं दिखा रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि इस चीज़ को क्यों छुपाया जा रहा है। पॉलिटिक्स ही लग रहा है सर, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के लेकर ही बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कांग्रेस और बीजेपी आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक साधारण सा एक लद्दाख का मुद्दा है सर। लद्दाख अगर देश का हिस्सा है तो देश को तो लद्दाख के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना तो चाहिए ना सर, वही तो, इसीलिए तो हैरान है सर। हम तो वांगचुक के लिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए हैं सर, सोनम वांगचुक के सपोर्ट के लिए आए, और क्योंकि वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में अपना उतना बलिदान दे रहे हैं सर। कितने 15 दिन हो गए उनको अभी फास्टिंग करके। सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है वैसे तो। देश में एक नया नारा उठा है, शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी का सम्मान। हर कोई राजनीतिक दल उसी पे बात कर रहे हैं, नारी का सम्मान, नारी का शक्ति। इतने सारे महिलाएं जब आज चाहे वो धूप हो, ठंडक हो, खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट पे उतर आए, उनका सम्मान, उनका तकलीफ चाहिए सर, ये तो ना समझना चाहिए, उन समझना चाहिए सर, ये तो समझना चाहिए। क्योंकि देखो धूप में भी बैठे हैं, बर्फ़ में भी बैठे हैं, इतने माइनस टेम्परेचर में बैठे हैं यहाँ पे धरना देने के लिए, कि पोलाइटली तरीके से यहाँ पे समर्थन सभी लोग कर रहे हैं सर। तो मुझे यही इसी बात का दुख है कि विपक्ष पार्टी या जो सत्ता में है वो इस चीज़ का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। इस चीज़ का दुख है सर। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसके बारे में मालूम है आपको? हाँ, मणिपुर में जो लेडीज़ के साथ अत्याचार हुआ था वो भी नहीं होना चाहिए था। उस पर भी वही पॉलिटिक्स ही खेला गया है ना सर। सब कोई चुप बैठा, चुप बैठे हैं सर, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आप लोग के बारे में भी चुप बैठे? हमारे लोग, हाँ जी, हमारे इसमें भी चुप बैठे हैं सभी। मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी को यही कहेंगे कि लद्दाख के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आके देखिए, यहाँ सिचुएशन क्या है, कितने पोलाइटली तरीके से लोग यहाँ पे मतलब धरना दे रहे हैं। तो उनके बारे में भी उनको थोड़ा सा संज्ञान लेकर आगे क्या करना चाहते हैं अच्छे तरीके से उसका ऐसे करे सर। लद्दाख को भी फिर मणिपुर की तरह लद्दाख को भी नहीं बनाया जाए। आपको डर लगता है? डर लगता है सर हमें। आपको डर लगता है कि लद्दाख भी मणिपुर जैसा बन सकता है अगर कुछ डिसीजन नहीं लिया तो। इसके आगे डिसीजन लेना चाहिए सर। Since I've started my report, you haven't seen the Haim stopping. The Haim has been on. And these people are saying the Haim would give them spirit. The Haim would give them courage. The Haim would give them resilience. The Haim would give them tolerance. While mainstream media, quote unquote, mainstream media, has chosen to remain absolutely silent on this, like they had stayed silent on Manipur for the longest time. We stand by our pledge. Our journalism is for the people, by the people, and of the people. I could not afford another ticket for my camera person Ronnie or Shuman. I have come alone. For me, coming here was more important than how I do my work. For the moment, another independent journalist, Hussein, has been very, very kind and agreed to hold the phone so that I can be on this side of the camera. Otherwise, holding it on a selfie stick and do all the interviews can be very difficult at times, and I'm thankful to Hussein for that. Help us tell their stories, and you can do that very easily. Like, share and subscribe. Your subscription matters a lot, views of the story matters a lot, and more you support us, more you help us grow, reach from one place to another, like we have reached here in Ladakh, telling the story of Ladakh. In Ladakh, this is Tamal Saha for News the Truth.
entity.